Good morning. So today we are at Namma Farmers Store and we'll be talking to Kavita ma'am, who is the owner and the part of this community. सो मैम आपका जैसे लाइक ऑर्गेनिक फार्म है, तो अभी आपका आइडिया क्या था कि मतलब पहले व्हाट वाज योर आइडिया बिफोर लाइक हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दिस न्यू बिजनेस? हाँ, मैंने जैसे कहा था कि हम तो 15 लोग थे, अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, बट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था बिकॉज मैं तो महिला किसान अधिकार मंच से थी, तो जो जिनके पास लैंडलेस एग्रीकल्चर वुमेन लेबरर्स है, तो उनका आइडेंटिटी और रिकग्निशन के नाम पे हमने कलेक्टिव फार्मिंग शुरू करना था। तो मैं चामराजनगर जिला गई, तो वहाँ पे ये काम शुरू हुआ। बट कुछ और लोग थे, कुछ लोग सीखने आए थे, कुछ लोग फार्मिंग कर रहे थे, बट वो अकेले नहीं करना चाहते थे, कम्युनिटी ढूंढ रहे थे। तो अलग अलग किस्म के लोग, हम तो बस ये चाहते थे कि लोग मतलब आपस में सीखे और देन आगे बढ़े। तो वो सीखने के समय पे हम भी खुद प्रैक्टिस करने लगे और फिर और भी फार्मर्स आने लगे। तो प्रोड्यूस तो आया, मतलब बहुत मुश्किल से हमने सीखा। मुश्किल मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज देयर इज नो टेक्स्ट बुक नॉलेज इमीडिएटली एक जगह पे। तो लोगों से, साइंटिस्ट से बात किया, सीनियर फार्मर से बात किया, हमने खुद किया, तो देन प्रोड्यूस आना शुरू हुआ। तो हमने एक छोटे से टाउन में हमने मार्केट शुरू किया। सुबह हम ग्रो करते थे और डे टाइम हार्वेस्ट करके फॉर 3-4 आवर्स वी टू सेल इन द मार्केट और फिर वापस चले जाते फिर से खेती करने के लिए। बट प्रोड्यूस ज्यादा हुआ तो इसलिए हमें मैसूर आना पड़ा। सो मार्केट हमने लेटर ऑन सोचा। तो ये मैसूर चूज करने का क्या लॉजिक था? मतलब बिकॉज हम चामराजनगर से स्टार्ट कर रहे थे, तो फिर हमने सोचा, हम लोग चामराजनगर से नहीं है बट वहाँ पे गए, तो बस ये टाउन थोड़ा सा लाइक दिस हैज गॉट द कंफर्ट ऑफ अ सिटी एंड टाउन, स्मॉल टाउन। So can you just say us about your upcoming projects and how well is it your store going, and do you have any more stores or any more fields that you have been growing on? Yes, we started from one store in Mysore. We started with home deliveries. We had a program called Bhumi Basket, where every week, you give them 10 kilos or 14 kilos as per the customer need. And in a basket, in a month, they would have 28 kilos or 56 kilos. So we started with that. And then we set up a store, one store in Jayalakshmipuram. And month on month, we are seeing around some 6 to 7% growth, I would say. And we started from there, and consumers, as I said, they wanted to invest and be part of this farming community and safe food community. And now at present we have 3 stores in Mysore and 2 in Bangalore. And in one of the store we have also a cafe where all the fresh produce. We have a cold pressed juice, we make breads without maida, and there is emmer wheat bread, ragi bread, and we make a lot of cookies. There's a baking whole lot of section, and we make pizza, fresh base, and this kind of safe food. And we have an handicraft section because as part of farmers, Hindi mein there is a word kisan or kisani. So kisan is like you grow produce, but kisani is like when there is no farming activity, there is a lot of allied works like pottery is there. There is people with woodwork. There's a lot of other skills work around it. So we also so this community is also built by artisans. We have a handicraft store in Gokulam along with the cafe, and here also in the store in opposite to All India Speech and Hearing, also potters around this place. Dura is a village which is close to Mysore, and one near Ujire. So we have a cooking utensils made from this clay, so that's also there because people can use it. And yes, many of the women self-help groups and farmers are part of this various production activities, so they can showcase their produce in their own market. Okay. Thank you for your valuable time, and it was nice meeting you and nice knowing about the store. Thank you, ma'am. See, these are all the cottages which are made by the farmers or by the fishermen. As ma'am said, it's from the Dua village. Well, coming this side, we have these bottle storage
where the freshly milk, oil, and everything are stored and sent sell to the customers on the freshly basis. This is the storage part of the store, and this is an experimental store, and you can find like everything. Okay, okay. Thank you.